that paper which were remaining. उन क्वेश्चंस को भी ट्राई कर लेना. दिखाओ कौन सा क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम नहीं है, मिसिंग है. ए डॉट डी ए बाई डी टी कैन बी. ओके, हाँ इसमें तो मिसिंग लग रहा है कुछ. ठीक है, बाकी ठीक है. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. So product of vectors has to be achieved by these two methods, right? Scalar product and vector product. What do we do in scalar product? Let's say we have two vectors b and a, and the angle between them is theta. So how do we define the dot product or scalar product of these two vectors? A dot b represented by a dot b. So you have to take the projection of one of the vector along the other vector and then take the multiplication with the magnitude of other one. क्या आ जाएगा इसका? The component of a vector along this particular vector will be a cos theta. So this a cos theta, which is the projection of a on b, multiplied by the magnitude of b, will give the scalar product. Okay, a cos theta multiplied by b, or other way around, b cos theta multiplied by a, projection of b on a multiplied by the product of, multiplied by the magnitude of the other vector. So this we can write it as a parallel b, component of a parallel to b multiplied by b, or we can also write this as b parallel a. Okay, this is the dot product. So basically in the multiplication there are two vectors involved, but the result is going to be a scalar. Example work जैसे हो गया f dot s, है ना. तो डॉट प्रोडक्ट वाले बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हमको दिखाई देंगे यहाँ पे. whenever two vectors are involved, product has to be achieved by these two methods. Okay, so what if in this case we want to find out the angle between two vectors? Let's say दो vectors दिया हुआ है और we have to find out the angle between the two vectors. Cos theta we can find out from here. A dot b divided by magnitude of a multiplied by magnitude of b. This will give me the angle between two vectors. Or suppose sometimes they ask you about the projection of one vector over the other vector. Let's say a cos theta is the projection of vector a over vector b. So will that be a dot b divided by the magnitude of b? लिख सकते हैं इसको ऐसे. This is projection of the magnitude of projection of projection of a over b. ठीक है, a cos theta is the magnitude of projection of b cos theta भी वैसे ही निकाल सकते हैं, a dot b divided by a. वेक्टोरियल फॉर्म में इसको कैसे लिख देंगे? a cos theta. What is the direction of a cos theta here? Along b हमने रिजॉल्व किया है. So suppose if I am writing vector a as a parallel vector plus a perpendicular vector. Basically what we are doing is we are resolving the vector a along two rectangular components, one along b and the other one perpendicular to b. So what is a parallel vector here? This we have already seen. Length of the projection was coming out as a cos theta.
and the direction is along B, so that's why B cap. ठीक है. Similarly, A perpendicular vector क्या आ जाएगा यहाँ पे? We have to take the difference of A parallel with A vector. Okay, this will give me the A perpendicular value. ठीक है. So angle between two vectors is 90 degree. That is also one of the important points. कई बार questions में पूछा जाता है, kinematics में भी देखोगे, the velocity vector will become perpendicular to the initial velocity vector, those kind of things. So if we want to find out two orthogonal vectors using dot product, can we say that the dot product of them will be equal to 0? If vectors are orthogonal, write down this point, vectors are orthogonal, the dot product has to vanish 0. And of course the magnitude is going to be maximum for 0 degree, and the value of this is going to be minimum for 180 degree. Vector having a magnitude of 10 units and perpendicular to the vector this. Which one? D. मतलब again orthogonality ही check करना है ना यहाँ पे. Dot product has to be equal to 0 and the magnitude should be 10 units. These two conditions we have to check. Option C. तो option C से dot product 0 आ जा रहा है and even the magnitude is also 10 units. Some applications I think you might be knowing about all this. Force dot displacement is equal to work, है ना? निकाल लोगे इसको, निकाल के बता दो इसका आंसर क्या होगा. Displaced from point A to B, constant force acting which is 34 Newton acting at in the direction of AP. So we have to find out the force and the work done. क्या आ जाएगा फोर्स यहाँ पे? So 34 is the magnitude and the direction is AP cap. What is AP cap in this? 10 minus 2 is 8. So 8 I cap. 2 minus 2 is 0. Minus 11 minus 4 is minus 15 J K cap. Whole divided by इसका कितना आ जाता है magnitude? 225 plus 64 is how much? 225 plus 64 is 289, right? 17. So we have to multiply this, sorry, divide this with 17. We'll be getting the value as 16 I cap minus 30 K cap. Okay, this is the force in this case. और work done तो तुम निकाल लोगे यहाँ पे. AB vector is already known to you. Force with the displacement dot product. Angle between two vectors we have seen. कर लोगे इसको. Again this you can do. What is the angle between these two? I think you can understand it using that also. Direction cosine जो होता है उससे, है ना? Dot product से तो आ ही जाएगा. Direction cosine से भी समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए. Cos inverse 1 by root 3, isn't it? Projection of this you can find out, right? Dot product को 0 कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा. Magnitude of component of A along B. Write down like you have to find out the vector magnitude of vector component of A along B. Okay, vector component निकाल के बता दो, not the magnitude.
आई डॉट आई 0 है ना, तो बस सॉरी आई डॉट जे आई डॉट के दोज हैज टू बी 0, डिसिमिलर वाले जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या बचेगा फिर, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ मल्टीप्लाई करना व्हाइल टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट। सो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2 plus 6 minus 2, so 6. So magnitude of component of A along B will be how much? A cos theta चाहिए, मतलब B से divide करना है इसको. So if I divide this with B, how much do I get? This is let's say A cos theta. Okay. So 6 divided by B, B का magnitude कितना आ जाता है? 3, which is 2 units. So magnitude is going to be 2 units and the direction is B cap. So B cap मतलब आ जाएगा ये तुम्हारा I cap plus 2J cap plus 2K cap whole divided by 3. Okay. ठीक है, कर लोगे इसको, ठीक है. This one, tell me the answer for this. AB magnitudes are known but the direction is not known. तो यहाँ पे पूरे प्रोडक्ट को एक्सपैंड करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि A1 को A1 के साथ, A2 को A2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है ना. क्या करना होगा फिर? What do we write here? 6A1 square, isn't it? 6A1 square. No, it has to be A1 vector. Okay, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे. So 6A1 square. After that minus 6A2 square. ठीक है, और A1 A2 का प्रोडक्ट कितना आ जा रहा है यहाँ पे? वी आर गेटिंग 9A1 A2 में प्लस में आ जाएगा और 4A1 A2 आई थिंक माइनस में, तो मतलब 5 आ जाएगा है ना. तो प्लस 5 टाइम्स A1 डॉट A2. So these all quantities are already known to us. This thing we have to evaluate. कितना आ जाएगा ये वैल्यू? 6A1 square is going to be 6 into 9. कितना आ जाता है? 54. And then 6 into 25. 125 आ रहा है क्या? 150. What is this product? A1 dot A2. For that they have given this, no? क्या आ जाता है? 2A1 A2 cos theta while taking the magnitude of this vector. So A1 square A2 square 2A1 A2 cos theta is 2A1 dot A2. वहाँ से A1 dot A2 आ जाएगा. कितना आ जाता है वैल्यू बताओ? minus 9 by 2. So this is minus 9 upon 2. The final answer is coming out as minus 96 minus 45 by 2. Minus 96 minus 22.5 कितना आ जाएगा? I think 96 22.5. C will be the answer. ठीक है, देखो इसको.
p square plus q square plus 0. Dot product. What about dot product? Dot product of p plus q and p minus q. Try to check that as well. डायरेक्टली डाल के भी चेक कर सकते हो ना स्टेटमेंट वेदर द स्टेटमेंट इज सेटिस्फाइंग द सेकंड स्टेटमेंट और नॉट. थीटा 1 एंड थीटा 2 समझ में आ जाएगा ट्रू है फॉल्स है क्या है. करेक्ट. कितना आ जाएगा इसका रिजल्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट p plus q, p minus q acting at theta angle. Let's say this vector is p plus q, this is p minus q. They are at theta 1 angle with respect to each other. And the resultant is coming out as 3 times p square plus q square. क्या आ जाएगा वैल्यू इसका? वेक्टर p plus q का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस and plus 2 times p plus q dot with p minus q. How much are we getting this? p square plus q square तो दो बार आ ही जाएगा यहाँ पे. बचा अपने पास 2 times p dot q, 2 times p dot q. They will get cancelled out. So we are left with twice of p square plus q square. What else apart from this? This one p square minus q square आ रहा है क्या डायरेक्टली? दोनों ऑर्थोगोनल. p and q are perpendicular to each other. तो कितना आ जाएगा ये? p square minus q square आ गया ना डायरेक्ट प्लस q square आ गया डायरेक्टली ना माइनस आ करेक्ट ऐसा कुछ आ रहा है. p plus q and p minus q are making theta angle with respect to each other. ऐसे तो लेना चाहिए यहाँ पे mod of p plus q mod of p minus q multiplied by cos of angle between them. Now try to put this value theta 1 is equal to 60 degree whether we are getting this answer or not. कितना जा रहा है? 3p square plus q square. Is this getting satisfied? नहीं आ रहा है. सोचो. एंड 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे तो ये वैनिश हो जाएगा ना. तो 90 डिग्री पे तो करेक्ट है ये. तो स्टेटमेंट दिस वन इज करेक्ट ओनली. व्हाट अबाउट दिस वन? पक्का? तो मतलब क्या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाना चाहिए फिर? तब तो दोनों फॉल्स हो जाना चाहिए ना. ओके. When they act at theta 1 angle with each other, the magnitude of the resultant is this. And then theta 1 is equal to this. I mean, they are trying to say whether this is possible or not. है ना?
ये तो है ही 90 डिग्री के लिए सेटिस्फाई भी हो रहा है, 60 डिग्री के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, राइट? पक्का कैलकुलेशन सही से कर दिया है ना? ठीक है। अगर 60 के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो नाउ टेल मी वेदर दिस वैल्यू इज पॉसिबल और नॉट। मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है इसका? 1। ये वाला तो ठीक है, इसका मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड जो भी आ जाए, है ना? And we know that the dot product maximum possible magnitude will be if cos 0 डिग्री जब आ जाएगा तब। तो cos 0 डिग्री आने पे कितना आ जाता है ये वैल्यू? कितना आएगा? ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है? दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक नो। cos theta is, मतलब you just take the dot product of these two and maximize that value। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके मैक्सिमाइज करने का ट्राई करें बस। ओके, तो फिर फाइनल रिजल्ट इज, फिर मतलब डी आंसर करेक्ट है इसका? क्या बोलते हो अंबर? दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से नो? वही, अगर ये पॉसिबल नहीं तब तो फिर दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए। इसका इवेल्युएट करने के बाद ये वाला टर्म तो आ गया, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज व्हाट वी हैव टू डू नो। कितना आ जाता है ये वैल्यू फिर? वन मोर थिंग दैट इज गिवन इज p and q are perpendicular to each other, that also we have to make use of। p square minus q square is what we are getting no, this dot product p plus q, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो। how much is this value coming? p square minus q square, p dot q p and p dot q तो कैंसिल ही हो जा रहा है, तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, राइट? तो फिर सब्स्टिट्यूट करके देखो कितना आ जाता है फिर वैल्यू इसका। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू गेट नो इन दिस केस, ये आना चाहिए ना। तो फिर ये डबल टाइम्स ये आ गया प्लस, ये तो 2p जैसा कुछ आ जा रहा है यहाँ से। दैट इज व्हाट द वैल्यू यू आर गेटिंग नो, इसको इवेलुएट करके। फाइनल वैल्यू का बात कर रहा हूँ जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये तो फिर रॉन्ग हो गया ना तब तो। दिस इज गोइंग टू
गिव यू रॉन्ग रिजल्ट अगर P परपेंडिकुलर टू Q है और हम डॉट प्रोडक्ट को इवेलुएट करते हैं तो एनीवे वो वाला टर्म वैनिश हो जा रहा है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 90 डिग्री केस तब तो फिर तब दिस सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन लिखो एक द इंसिडेंट रे on a plane surface. The incident ray on a plane surface is vectorially represented as the incident ray on a plane surface is vectorially represented as 3 I cap plus 2J cap minus K cap. Given that it is incident on XY plane, given that it is incident on XY plane, find the reflected ray in this case. Find the reflected ray in this case. This is the XY plane, suppose XY plane में plane mirror है अपना and the ray is coming like this. Your normal vector n cap, what will be that? K cap जैसा हो जाएगा है ना क्योंकि XY plane है ये. So this is your angle of incidence I और रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे चला जाता है ये. तो this ray we are supposed to find out. ठीक है कैसे फाइंड करेंगे इसको फिर? Angle made by the incident ray with the normal, how much is that? I या पाई माइनस आई इन दिस केस? डायग्राम से क्या लग रहा है, आई है या पाई माइनस आई है? The ray is going in this direction, no? Normal is like this. So this has to be pi minus I, right? अच्छा. This vector we are supposed to find out. ये क्या होगा, है ना? इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं थोड़ा सा आगे, मतलब पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर. ठीक है and I take this triangle, this is I vector, this is R vector. इसको क्या बोलेंगे फिर? इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? This angle is I, so can I say that this angle will be 90 minus I? ये अगर 90 माइनस आई है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 90 माइनस आई, राइट? And in this particular triangle, can we say that I vector plus this vector is equal to this vector? बोल सकते हैं. तो इसका मतलब this vector is going to be difference of these two vectors, right? R vector minus I vector is equal to this vector. And this vector from this triangle we can very well calculate, no? Magnitude कितना आ जाएगा इसका?
इन जनरल अगर अपने पास एक वेक्टर है जैसे ऐसे, एक सेकेंड, देयर आर टू वेक्टर्स लेट्स से, इसमें जो रिजल्टेंट है लेट्स से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, एंड resultant in this case will be in this particular direction, right? The one which will be bisecting these two. Okay, the angle between these two. तो ये अगर एंगल थीटा हो गया, दिस विल बी थीटा ओनली, ओके, या फिर थीटा मान लेते हैं दोनों के बीच का एंगल, सो थीटा बाई टू विल बी द एंगल, ओके। सो ये जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ए, so this is going to be the summation of these two vectors, right? And the difference of these two vectors can be represented by this particular arrow, जैसा हम लोगों ने अभी देखा है इसमें है ना। पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से भी इसको बोल सकते हैं, इफ वी एक्सटेंड इट लाइक दिस, ये मेरा समेशन हो गया और ये हो जाएगा डिफरेंस, दूसरा वाला डायगोनल, ठीक है। तो कितने कितने वैल्यूज हो जाएंगे, बिकॉज दिस टाइप ऑफ सिचुएशन यू विल कम अक्रॉस इन फिजिक्स अ लॉट, है ना, जहाँ पे तुमको रोटेशन ऑफ वेक्टर्स दिखाई देगा होता हुआ, ठीक है, simply without any change in the magnitude. What is this quantity in this case? Tell me, 2a cos of theta by 2. What is this quantity in this case? 2a sin of theta by 2. Okay. Try to find out the value of this now and then try to express it in the form of dot product. क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो r वेक्टर जैसे लिख रहे हैं हम लोग, क्या आ गया अपने पास ये, दिस इज इक्वल टू, मतलब यूनिट वेक्टर के फॉर्म में तुम एक्चुअली लिख सकते हो इसको, सो यूनिट वेक्टर r कैप, because otherwise how can we say that these two are in of the same magnitude? ये जो ट्राइंगल जो बना है वो यूनिट ट्राइंगल बना है, मान लो दिस वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ओके। और ये वाला जो लाइन है उसको हम लोग डायरेक्टली तब बोल सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स a cos theta by 2, that means 2 times 1 multiplied by cos of what is the angle here, in this case theta by 2 is 90 minus I itself, तो कितना आ जाएगा ये वाला वैल्यू, निकाल लेंगे ना उससे, क्या लिख देंगे आर कैप वेक्टर को यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू आई कैप वेक्टर माइनस, सॉरी दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, नो, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे आई कैप वेक्टर प्लस द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, लेंथ ऑफ दिस इज गोइंग टू बी 2 साइन थीटा बाई 2 ना, साइन थीटा बाई 2 मतलब साइन ऑफ 90 माइनस आई, विच इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ आई, करेक्ट। तो 2 cos ऑफ आई को अगेन हम कैसे रिप्रेजेंट करें, आई थिंक डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको, तो क्या वैल्यू आ जाएगा इसका देखो, आई कैप वेक्टर प्लस हाउ मच इज द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई एंड एन, ट्राई टू एक्सप्रेस इट, क्योंकि आई वेक्टर हमको पता है, एन वेक्टर हमको पता है, सो वी कैन प्रॉब्ली डू दैट, राइट। एंगल बिटवीन आई वेक्टर एंड एन वेक्टर इज हाउ मच, पाई माइनस आई, so can we say I dot n vector will be equal to कितना आ जाएगा, 1 multiplied by 1 multiplied by cos of pi minus I, correct, which is minus cos of I. So now if I substitute it here, how much do I get in terms of the unit vectors here? hmm. माइनस ऑफ 2 आई डॉट एन आ जा रहा है ना करेक्ट लिखा है मैंने, आई डॉट एन इज माइनस ऑफ कॉस एन, ठीक है, सो माइनस ऑफ 2 टाइम्स डॉट आई डॉट एन विल बी दिस वैल्यू, तो ये आर कैप वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, यू कैन फाइंड आउट इफ दे गिव यू द मैग्नीट्यूड, यू कैन मल्टीप्लाई दैट विद दैट पर्टिकुलर वेक्टर। क्या आ जाता है यहाँ से आंसर इसका बताओ अब, आर कैप का, आई कैप इज हाउ मच, कितना कितना दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, 3
9 + 4 + 1 √14 आ जा रहा है. ओके, ठीक है. तो दिस इज गोइंग टू बी 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइड बाय √14 माइनस विथ 2 टाइम्स i डॉट n कर दो. कितना आ जाता है ये? i कैप डॉट n कैप. n कैप इज एनी वे यूनिट वेक्टर ओनली. i कैप तुम्हारे पास सामने है यहाँ पे. तो क्या आ जाता है ये वैल्यू? ओनली 1/√14, राइट? 1/√14 जैसा. अच्छा हाँ, डायरेक्शन भी तो देना पड़ेगा ना यहाँ पे. दिस इज गोइंग टू बी अ स्केलर एंड यू आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग दिस वेक्टर. तो i डॉट n along which direction you are going to take it? I think we should be multiplying it with n cap, no? Because समझ लो कि इसका दो components है ना? The one which is along the surface वो तो ऐसे ही as it is pass कर जाएगा. Reflect कौन सा वाला होता है? Perpendicular component will get reflected. So that's the reason why what we are doing is इसका हम लोगों ने निकाल लिया. It's like taking the component of incident ray along the normal and then the direction, saying that the direction is going to be along the normal. Okay? So इस तरह से हमको लेना पड़ेगा वेक्टोरियल फॉर्म में. ये वैल्यू आ जाता है -1/√14 और उसको हमें n कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विच इज k कैप इन दिस केस. ओके, तो फाइनल आंसर क्या आ गया इसका? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाई √14. This is the unit vector in the direction of reflected ray. इससे क्या पता चल रहा है कि XY प्लेन वाला एज इट इज पास कर गया. 3i कैप 2j कैप था इंसिडेंट रे, यहाँ पे भी वही वाला आ रहा है कंपोनेंट्स. ओनली द रिफ्लेक्टेड रे वाला पार्ट इज सॉरी द वन विच इज अलोंग द नॉर्मल दैट इज गेटिंग फ्लिप्ड. ओके, वो फ्लिप हो जा रहा है एक तरह से. तो यहाँ पे ये चीज भी समझ में आता है कि दिस वेक्टर वाज काइंड ऑफ नॉर्मल वेक्टर जो दिया हुआ था यहाँ पे वो बहुत ही सीधा सा दिया हुआ था, है ना? इन केस इफ द नॉर्मल वेक्टर इज गिवन इन सम अदर रैंडम डायरेक्शंस, वहाँ पे तुमको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. अदरवाइज अगर तुमको पता है कि हाँ इट इज अलोंग अ फिक्स यूनिट वेक्टर, तो डायरेक्टली तुम बता सकते हो द वन विच इज अलोंग द प्लेन विल गो एज इट इज. द वन विच इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड जो नॉर्मल के अलोंग है उसका हम लोगों को लेना पड़ेगा प्रॉपरली. कंपोनेंट ऑफ ठीक है. सो कंपोनेंट लेके और उसके बाद फिर तुमको वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा उससे. अलोंग द प्लेन वाला को एज इट इज पास करा दो और बाकी कंपोनेंट लेके कर दो. फाइन. राइट ऑन. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. अच्छा, एक और क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था ना वो मैक्सिमम एंगल वाला. देयर इज अ कांस्टेंट वेक्टर, देयर इज अनदर वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, और पूछा था उसमें कि मैक्सिमम एंगल क्या होगा उसका रिजल्टेंट का. कितना आया था उसका आंसर? ये उसको vector A is a constant vector, vector B is something whose magnitude is fixed, but the direction you can keep it in any way. तुमको मैक्सिमाइज करना है वहाँ पे एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. फिजिक्स में आएगा वो बार बार. अब जैसे मान लो आगे चल के हम रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, मैक्सिमम मिनिमम ड्रिफ्ट निकालते हैं वहाँ पे. तो यूजिंग दिस यू कैन वेरी क्विकली फाइंड आउट रादर देन डिफरेंशिएटिंग इन ऑल. कोलिजन में भी आता है इनफैक्ट मैक्सिमम डाइवर्जेंस एंगल क्या होगा दो बॉडीज अगर कोलाइड कर रहा है. वहाँ पे भी तुम यूज़ करोगे इसको, मतलब वेक्टर ट्राइंगल का यूज़ करके बार बार ऐसे तरह के क्वेश्चंस को कर दोगे. सो दिस इज अ काइंड ऑफ थ्योरम दैट यू विल बी यूजिंग ओके इन वेक्टर ओवर एंड ओवर अगेन इन कमिंग चैप्टर्स. एक वेक्टर है कांस्टेंट, दूसरा वेक्टर है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का. एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड द फर्स्ट वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर दैट यू हैव टू मैक्सिमाइज. So what is that angle? Angle between A and B in that case. तो ये वाला वेक्टर कांस्टेंट होने का मतलब इसका डायरेक्शन भी फिक्स है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स है. द अदर वेक्टर
is having a fixed magnitude, other vector is having a fixed magnitude, but direction is like something that you can control. और तुमको करना क्या है यहाँ पे कि मैक्सिमाइज करना है इस वाले एंगल को. दिस थीटा एंगल यू आर सपोज टू मैक्सिमाइज. तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा? This angle we are supposed to find out. And this was given that this vector A has got a larger magnitude as compared to vector B. क्वेश्चन में ये दे रखा था, है ना? It's like this vector is fixed. On the tip of this you have placed the other vector B. और इसको तुम घुमा सकते हो. You can rotate in a circle this vector, right? जो सेकेंड वाला वेक्टर है वेक्टर बी, उसको हम सर्कल पे रोटेट कर सकते हैं. इफ आई ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस बी यूनिट्स अराउंड इट, if I draw a circle of radius b units around it, so do you understand that if we keep the direction of b in this way, मतलब जैसे जैसे इसका टिल्ट को इधर लेके जा रहे हैं वैसे वैसे ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है बट एंगल इज गेटिंग रिड्यूस्ड. ओके, तो इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो क्या 90 डिग्री पे मैक्सिमम एंगल होगा? वी कैन एक्चुअली फर्दर टेक इट टू द सेकेंड क्वाड्रेंट लाइक दिस. तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे लेके आएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब this line will become tangential to this line, isn't it? ऐसे tangential हो जा रहा है. मैं काम करता हूँ यहाँ से टेंजेंट पहले ड्रॉ कर लेता हूँ. ओके, so if we keep the direction of vector b in this particular way, तो ये वाला एंगल हो जाएगा मैक्सिमाइज्ड, है ना? दिस इज गोइंग टू बी थीटा मैक्सिमम. So what is the value of theta maximum in this? Sin theta maximum is how much? B divided by A. And this angle now we can find out, right? ये वाला angle. ये वाला एंगल कितना आ जाएगा फिर? दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा मैक्स. तो ये आ जाएगा तुम्हारा 90 प्लस थीटा मैक्स. ठीक है, सो एंगल बिटवीन ए एंड बी under this condition is going to be 90 plus sine inverse of b upon a. Okay, 90 plus sine inverse of b upon a. ड्रॉ कर लो, इसको लिख लो. डन.
ठीक है. Write down vector products of the two vectors. How do we take the cross product of two vector? AB sin theta is going to be the magnitude. Direction कुछ होना चाहिए इसका, because vector product is going to yield a vector. So basically what we are doing in this case is कि दो vectors अगर अपने पास है, vector A and vector B, दोनों के बीच की angle theta है. So we are taking the component of vector, perpendicular component of vector A on B, and then multiplying it with the magnitude of this vector. Okay. This length is going to be A sin theta. We will be calling this as A perpendicular. इसको लिख सकते हैं हम लोग A perpendicular multiplied by B. And the direction is going to be n cap. Okay. Write down n cap is a unit vector perpendicular to the plane containing A and B. N cap is a unit vector perpendicular to plane containing A and B. You can also write this as B perpendicular into A multiplied by n cap. तो ये n cap का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? A cross B divided by AB sin theta, which is magnitude of A cross B. For example, we have let's say torque. Torque due to a force can be given as R cross F, position vector of point of application of the force cross with force vector itself. जैसे कि एक पार्टिकल मान लो यहाँ से ड्रॉप कर दिया तुमने, मास इज m and distance is going to be d. Write down, determine the torque due to gravity. Determine the torque due to gravity when it has fallen a distance of h. When it has fallen a distance of h. Determine the torque due to gravity when it has fallen a distance of h about point O. About point O.
mg का force is acting like this, r cross f is what we are supposed to calculate here. या तो तुम perpendicular distance on the line of action of force ले लोगे, या तो mg का component ले लोगे perpendicular to r vector. Okay, so r vector in this case is like this. This is my r vector. Okay, which way is the simpler way of doing it? mg का component निकालने के लिए तो कोई angle निकालना पड़ेगा. Then you will be taking the component of mg perpendicular to r multiplied by r you will be doing. Again this r is not known to you, तो तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा डी के फॉर्म में, डी एंड एच के फॉर्म में उसको, है ना. तो रादर व्हाट वी कैन डू इज लाइक आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एम जी, है ना. द कंपोनेंट ऑफ आर विच इज परपेंडिकुलर टू एफ मल्टीप्लाइड बाई एफ, दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डू. क्या आ जाएगा? द कंपोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू एफ इज डी इटसेल्फ. ओके, सो एम जी डी इज गोइंग टू बी द टॉर्क. ओके, एंड इनटू द प्लेन. ठीक है, डायरेक्शन कैसे हो जाएगा इसका? How do we take the direction of two vectors, like cross product of two vectors? We have to align the four fingers in the direction of the first vector, curl it towards the second vector to get the direction. जो thumb point करेगा वही direction हो जाएगा. ठीक है, तो direction can be determined using right hand thumb rule. ठीक है, direction can be determined using right hand thumb rule. Align the four fingers of your right hand. लिख लो, align the four fingers of your right hand in the direction of the first vector. Align the four fingers of your right hand in the direction of first vector. Curl it towards the second vector. Curl it towards the second vector through smaller angle. Through smaller angle. Thumb will point in the direction of A cross B. Thumb will point in the direction of A cross B. इस क्वेश्चन में मेरे को लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक ही है. आई थिंक द आंसर शुड बी करेक्ट. वी हैव डन सम मिस्टेक इन दिस. पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पहला दोनों ब्रैकेट तो आ जा रहा है. लास्ट वाला अगर तुम करते हो 60 डिग्री तो अपॉन सब्स्टिट्यूटिंग इट इज कमिंग 3 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. कुछ गलती किया है तुमने कैलकुलेशन करते वक्त. 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो आया. उसके बाद जब तुम डॉट प्रोडक्ट लेते हो इसका तो 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, द फर्स्ट वन, ओके, multiplied by p square plus q square. The second one, p minus q का mod multiplied by cos 60 is going to be 1 by 2, no? तो ये आ जा रहा है इससे वैल्यू. कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी था इसमें. 2 टाइम्स p plus q का mod into p minus q का mod into cos 60 will be how much? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट वैनिश हो जाएगा अंदर वाला, तो बचेगा यही ना. mod of p plus q is how much? p square plus q square plus 2pq. हाँ, तो फिर तब ये आंसर होना चाहिए ना. मेरे दिमाग में कैलकुलेशन उसका चल रहा था तो गलत आ रहा था उसका आंसर. आंसर शुड बी ऑप्शन ए रादर. बोथ आर करेक्ट. ओके, तो हमने देख लिया यहाँ पे एन कैप का डायरेक्शन. इसके बाद सी इज ऑर्थोगोनल टू बोथ वेक्टर्स, ये तो हमने देख ही लिया. दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स, की पॉइंट्स. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, एंटी कम्यूटेटिव बोलते हैं इसको, है ना. ए क्रॉस बी will not be equal to b cross a. Though magnitude wise they are equal but direction wise they are opposite. Okay, right on this point. क्योंकि ये राइट हैंड थंब रूल को वायलेट कर देता है, ऑपोजिट डायरेक्शंस हो जाएगा इनका. रादर व्हाट इज करेक्ट हियर?
A cross B is equal to minus of B cross A. Distributive vector product is distributive. Suppose if I have, let's say, this kind of a thing, A cross B plus C. So I can distribute this inside the bracket and we'll be getting the answer as A cross B plus A cross C. Okay. When two vectors are perpendicular, anyway, this is a known fact. The vector product of two parallel and anti-parallel vectors has to be 0. Okay. Cross product of the unit vectors usually will be using a right-handed system, coordinate system. Okay. Right on this point. Right-handed coordinate system में हम लोग कैसे determine करते हैं x, y, z का direction using this cross product itself. Okay. Right hand thumb rule का use करके. तो I cross J is cyclic rule यहाँ पे basically use करेंगे. I cross I, J cross J and K cross K. These all are 0. Why? Because they are parallel vectors. Sin theta will be 0 in this case. But when I say I cross J, that will be equal to how much? I cross J का magnitude कितना आ जाएगा? 1 unit. And the direction is going to be what? Using right hand thumb rule. So I cross J का जो direction आ रहा है, I is like this, J is like this. So K is like outward direction. Okay. K is in outward direction. So this I cross J will be K. Similarly, J cross K will be, so J is in upward direction, K is out of the plane. J cross K I के direction में आ रहा है ना, thumb is pointing to the right hand side direction. And K cross I is equal to J. So इसको cyclic rule में हम convert कर सकते हैं. I J K in the clockwise cycle when you are traveling. Then in that case, मतलब I J K ऐसे ले लो. I J K. While you are traveling in the clockwise cycle, the next element is going to give you the result. I cross J is equal to K, J cross K is equal to I, K cross I is equal to J. And anti-clockwise cycle में अगर चले जाएंगे तो in that case, with a negative sign you have to substitute the value. तो अगर मान लो कि मैं ऐसा लेता हूँ एक्सेस अपना, this is my y axis, x axis. So what is the positive direction of z axis in this case? x को मैंने लेफ्ट में लिया पॉजिटिव एंड y को मैंने नीचे लिया है पॉजिटिव. k का डायरेक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे फिर? z axis का. You have to always stick to the right-handed coordinate system until and unless specified. Left-handed coordinate system के बारे में जब तक बताया ना जाए तब तक हमें right-handed coordinate system लेना है. So I cross J in this case is also coming out as out of the plane because we have changed the direction of both of them. Okay, तो ये out of the plane ही आएगा यहाँ पे. ठीक है, Z axis will be out of the plane in this. Whereas अगर बस मैंने X का change किया होता Y का वैसे ही रखने देता, उस केस में into the plane will be positive direction of Z axis. That also actually is important क्योंकि कुछ questions में तुमको दे दिया जाता है, जेई में भी पूछा गया है कई बार, कुछ questions में डायरेक्टली तुमको दे दिया जाएगा एक अनकन्वेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वहाँ पे तुमको राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करते हुए आंसर बताना है ना. मतलब लेट्स से अब जैसे मैग्नेटिज्म में एक दो क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, उसमें अनलेस यू आर नॉट टेकिंग द राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम इन दिस वे योर आंसर विल बी रॉन्ग, है ना. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो चॉइस होगा वो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल हो जाएगा. Okay, how do we take the product of these two vectors, cross product of these two vectors? तो डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना तुमको आता है
क्या आ जाएगा, आई कैप इंटू ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, then the middle one minus of k j cap. These are the free elements, no? If I hide this middle column, so ax bz minus bx az and k के लिए भी वैसे ही प्लस k cap ax by minus bx ay, ठीक है. So this is the result for cross product of these two vectors. लिखो, एक क्वेश्चन लिखो. A particle is located at 1 comma minus 2 comma 3. A particle is located at 1 comma minus 2 comma 3. 1 comma minus 2 comma 3. Force of 2 I cap minus j cap plus 3 k cap. A force of 2 I cap minus j cap plus 3 k cap is acting on the particle. Determine the torque due to this force. Determine the torque due to this force along x, y, and z axes. About x, y, and z axes. About x, y, and z axes. Point, what did I tell you? 1 minus 2 3. 1 minus 2 3 is the point. तो टॉर्क अबाउट एक्सिस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हाउ डू वी टेक द टॉर्क अबाउट एक्सिस? टॉर्क अबाउट ऑरिजिन तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली आर क्रॉस एफ करके, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट. सो टॉर्क अबाउट एक्सिस अगर मेरे को चाहिए एक्स एक्सिस के अबाउट, सो दैट इज नथिंग बट द एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस टॉर्क, है ना? तो कैन वी राइट टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू टॉर्क अबाउट पॉइंट. ऑरिजिन इज अ कॉमन पॉइंट ऑन ऑल द एक्सिसेस, नो, एक्स वाई जेड एक्सिसेस. तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ले लो और उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो आई कैप के साथ, यू विल बी गेटिंग टाउ एक्स, है ना? मतलब करना क्या होता है टॉर्क अबाउट एक्सिस लेने के लिए? determine the torque about a point on the axis and then take the component of that torque in the direction of axis. Okay, similarly, what is tau y? Tau y can be given as torque about origin dot product with j cap. Tau about z axis is going to be torque about origin dot with k cap. Okay, the component of that torque in the direction of x-axis, read it that way. Na, component of vector A in the direction of vector B will be how much? Component of vector A in the direction of vector B in terms of dot product, how much will that be? क्या बोलते हैं हम लोग? A along B चाहिए मेरे को. In terms of dot product, can we write it as A dot B cap? वही था ना, A dot B divided by B. A dot B cap gives you the direct component of vector A along the direction of vector B. Similarly, torque का अगर तुमको component चाहिए x axis के along, take the total torque about a point and then take the component along the x axis. This is again an important point. You should be realizing this. ऐसे बहुत छोटा सा point तुमको लग रहा होगा, but आगे काफी काम का हो जाता है. Component of, remember it this way, component of any vector A about B
about the direction of B is going to be A dot B cap. This is an important point, a very important point in fact. काम आएगा ये वाला चीज, इसको ध्यान में रखना ऐसे. So torque about origin dot with I cap will give you torque about x axis. Similarly y axis and z axis. कितना आ जाता है इसका आंसर? Tau x is equal to how much? तुमको यहाँ पे वैसे कुछ करना नहीं है, तुमने डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और x component, y component, z component वो दिख रहा है ऑलरेडी. What are the values? Tell me. माइनस 3 आगे -3 और +3 क्या है? कैलकुलेशन थोड़ा सा देखो ध्यान से. 3 + 3 x वाला क्या है? x is -3 and then this is 3 and this is 3. कर लेते हैं कैलकुलेट. क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? पोजीशंस बताओ. 1 - 2 3 and force is 2 - -1 3. तो ये आ जाएगा -6 + 3. तो -3 इज करेक्ट. -3 इज करेक्ट. इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपना 3 - 6 विथ अ नेगेटिव साइन, राइट? तो 3 - 6 3 आ जाएगा, करेक्ट है वो भी. एंड द लास्ट वन इज -1 + 4. तो 3 आ जाएगा ना. दिस इज -1 + 4, माइनस और माइनस, तो 3 आ जाएगा ये. -3 + 3 3. z वाला बोल रहा हूँ. कितना आ गया ये? -1. हाँ हाँ, ओके ओके. 3 - 6 इज गोइंग टू बी -3 और -j कैप था ना, ठीक है? तो ये आ जाएगा 3 यूनिट से. सो आई थिंक -3 3 3 आ रहा है ना, करेक्ट है कैलकुलेशन. सो -3 I कैप प्लस 3 j कैप. एंगुलर मोमेंटम इन द सेम वे. अगेन एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस भी पूछा जाता है. दिस इज टॉट एज अ थ्योरी ओनली. रोटेशन मैकेनिक्स में शायद तुमने देखा होगा, अगर पढ़ा है तुमने तो, है ना? टॉर्क अबाउट एक्सिस, टॉर्क अबाउट टॉर्क ऑफ torque about axis, angular momentum about axis. So again, angular momentum about point you have to calculate. Take the component of that angular momentum about that axis to find out the value of angular momentum about an axis. Okay. Okay. If two vectors are parallel to each other using cross product, how do we figure out the value? Parallel है तो cross product क्या होना चाहिए? 0. ठीक है, वहां से आंसर आ जाएगा. But that is going to be a lengthy solution for this, right? दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो हमें पता है कि the other one should be expressed as a scalar multiple of the first one, isn't it? That scalar multiple can be positive, negative, depending upon whether it is parallel or anti-parallel. Okay. तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? इसमें तो दिख रहा है साफ साफ 2 is going to be the answer. A and B are two vectors. Theta is the angle between them. So A cross B is √3. This also you can understand, right? इधर आ जाएगा AB cos theta और उधर AB sin theta magnitude wise. So tan theta is √3. Tan theta is √3. Cos theta sin theta, हाँ ठीक है. तो मतलब ये 60 डिग्री आ गया है ना. A cross B, this you can find out. फाइंड कर लोगे इसको भी. यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. हाँ वही A क्रॉस B डिवाइड बाई मॉड ऑफ A क्रॉस B. कर लोगे इसको. This is a very basic type of question. You can answer this. A cross B is equal to C. C is perpendicular to A. C is perpendicular to B. This is correct. Both of them. C is perpendicular to A cross B. Is that correct? C is in the direction of A cross B. No, C को ही तो A cross B बोल रहा है ये.
area of parallelogram, area of triangle. How do we calculate area of triangle? Mod of the cross product, right? So if we complete a triangle out of this, in that case, we know that half into base into height is going to be the value, isn't it? तो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है. तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्राइंगल. दिस इज गोइंग टू बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो बेस का लेंथ इज B एंड हाइट का लेंथ इज A sin थीटा, है ना? अगर थीटा एंगल हो गया दोनों के बीच का तो दिस इज गोइंग टू बी B into A sin theta. And A sin theta into B we have seen that is cross product. So we can write it as half into A cross B का mod. ठीक है? And if we complete a parallelogram out of it, we can understand कि double the area of the triangle is going to be the area of parallelogram. ठीक है? So area of parallelogram mod of A cross B. चले आगे. कर लोगे इसको आप? क्रॉस प्रोडक्ट ही लेना है दोनों का. ठीक है, दिस ऑल्सो यू कैन डू. Direction of the net force. R vector is given. How to find out direction of the net force in this? Differentiate twice to get acceleration ka direction. That will tell you about the force का direction in this. Fine. So ये dot product cross product basics हम लोगों ने देख लिया इसका. Write down scalar triple product. Scalar triple product. Represented by, let's say, three vectors are given to you और मेरे को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है. ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना इसको. A dot B cross C. Actually there is nothing new in this. B cross C is going to be a vector. उसके साथ तुमको A का dot product लेना है to get the scalar triple product. Okay. तो what if any of these vectors are let's say perpendicular? B और C में से कोई भी एक वेक्टर परपेंडिकुलर है. ये सब थोड़ा बहुत रिजल्ट्स तुमको काम में आएगा यहाँ पे. ऐसे तो मैथ्स में तुम पढ़ोगे ट्रिपल प्रोडक्ट्स वगैरह, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. So A cross B, sorry, A dot B cross C is given. Okay, so let's say the result of B cross C comes out to be perpendicular to A. In that case, what will happen? क्या आ जाएगा वहां पे वैल्यू? 0 आ जाएगा. तो इससे क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि if three vectors are coplanar, in that case A dot B cross C will be equal to 0. Right on this point. If three vectors are coplanar, if three vectors are coplanar, कुछ स्पेशल पॉइंट्स बस इसका थोड़ा ध्यान में रखना है फिजिक्स के लिए. If three vectors are coplanar, the scalar triple product, the scalar triple product should be 0. The scalar triple product should be 0. अच्छा, B क्रॉस C का मॉड जैसे हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रहा था.
A dot B cross C, let's say three sides of a parallelopipe is given, A dot B cross C, उससे हम क्या निकाल सकते हैं फिर? Just imagine that situation. B cross C का मॉड क्या दिया हमको? That gave us the area of parallelogram. Okay. अगर उसका तुम डॉट प्रोडक्ट लेते हो A के साथ, तो बेसिकली व्हाट विल हैपन देयर, जैसे B और C से बना हुआ ये पैरेललोग्राम मान लो, ठीक है, एंड A इधर है कुछ, ठीक है, तो अगर मैं इसका प्रोजेक्शन ले लूँ, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ले लूँ यहाँ पे, नहीं, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लेते हैं ना इसका, इन जनरल क्यूबॉइड का जैसे वॉल्यूम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं हम लोग, वी टेक द, हाँ मतलब जो भी बेस का एरिया है मल्टीप्लाइड बाई हाइट, दैट इज व्हाट वी डू नो। अच्छा वो वैल मॉड ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये जैसे इसका जो हाइट होगा दैट कैन बी कैलकुलेटेड, हाँ हाँ, दैट्स व्हाट ए डॉट बी क्रॉस सी अगर करते हैं तो बी क्रॉस सी के डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन जो आएगा, तो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर टू ए बेस ही आएगा ना यहाँ पे, तो इसका जो प्रोजेक्शन इसके अलोंग आएगा दैट इज गोइंग टू गिव यू दिस ए डॉट बी क्रॉस सी ना, तो height multiplied by area of the base is going to give you value volume of the parallelopipe. So right on this point, the volume of parallelopipe can be calculated. The volume of parallelopipe can be calculated using the scalar triple product. Using the scalar triple product. तो ये मान लो कि कुछ एंगल ऐसे थीटा बना रहा है, तो this perpendicular projection, this is going to be component of vector A along n cap, isn't it? Component of vector A along n cap. So that's how we are calculating the volume of parallelopipe bounded by these three vectors. What if any of these two vectors are perpendicular to this vector? What will happen to this box product, scalar triple product? अगर इन दोनों वेक्टर्स में से कोई भी एक वेक्टर इसके साथ परपेंडिकुलर हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू इवन दिस वेक्टर. So in that case, the triple product has to be 0. Okay, so write on that point as well. If either B or C is perpendicular to, if either B or C is perpendicular to vector A, if either B or C is perpendicular to vector A, the scalar triple product will vanish. The scalar triple product will vanish. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जिसको ध्यान में रखना है. ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस है वो तुम कर सकते हो इसके सारे. अभी वेक्टर्स में वैसे तो अलग से सेगमेंट कुछ नहीं दिया हुआ है, मोशन इन 2D में ही दे रखा है. दैट शीट इज डन नो. 67 कितने क्वेश्चंस थे उसमें? 67 क्वेश्चंस, दैट इज डन. ठीक है, हाउ डू यू वांट टू गो एट नाउ? काइनेमेटिक्स स्टार्ट करें या यूनिट डायमेंशन? यूनिट डायमेंशन नहीं करना है, बट एडवांस में दो क्वेश्चंस आ जाता है उससे. यू हैव सीन दैट नो. पेपर्स देखो, अगर तुम प्रीवियस ईयर का पेपर्स देखोगे, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस यू विल गेट. नहीं, यू शुड बी डूइंग इट रादर, क्योंकि 2 क्वेश्चंस बहुत बड़ा आरओआई है, एंड इट्स अ वेरी इजी चैप्टर. ओके, एंड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जैसे हो गया तो दैट इज यूजुअली नॉट टॉट इन मोस्ट ऑफ द क्लासेस ऑल्सो, बट आई विल बी टेकिंग दैट पार्ट एज वेल. तो यूनिट डायमेंशन से करते हैं, क्योंकि योर AIR का पहला टेस्ट विल बी ऑन यूनिट डायमेंशन, दैट VPAIR का जो टेस्ट होगा. ठीक है,
तो यूनिट एंड डायमेंशन से कर लेते हैं, इसके जो भी प्रॉब्लम्स है इसको कंप्लीट कर लो वेक्टर्स के। एक शीट और मैं देने का ट्राई करता हूँ इस पे, चाहिए या नहीं चाहिए वेक्टर्स का होमवर्क? नहीं चाहिए? हम्म, ज्यादा होमवर्क हो जा रहा है सुनने में आया मेरे को। हम्म, ज्यादा होमवर्क हो जा रहा है क्या? अमन सर को कंप्लेन कर रहे थे तुम? अमन सर बता रहे थे मेरे को ये चीज। ऐसे तो तुमने कर रखा है ना, ये सब चैप्टर्स तो ऑलरेडी तुमने देखा हुआ है पहले, तो आई थिंक बहुत जल्दी हो जाता होगा। ठीक है। तो पेज नंबर 178 क्वेश्चन नंबर 48, 46। पेज नंबर 178 क्वेश्चन नंबर 46। पेज 185, 42 टू 45 मैंने दिया हुआ था ना, 46 मैंने दिया हुआ था आई थिंक। 42 टू 47 दे दिया था। 48 से लेके क्वेश्चन नंबर 54 तक, नहीं 48 से 58 तक, क्वेश्चन 48 टू 58 सारे पीवाई क्यूज हैं। 167 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 17, 14 टू 17। चैलेंजेस में एक भी प्रॉब्लम नहीं है क्या वेक्टर्स का? अच्छा, चैलेंजेस का क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोला था, हो गया था। डन। ठीक है। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 भी ट्राई करना, यू जस्ट ट्राई इट आउट। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ चैलेंजेस, इंटीजर टाइप। ठीक है। एक शीट देखता हूँ मैं, इफ पॉसिबल आई विल गिव यू वन मोर शीट, अदरवाइज टुमारो विल स्टार्ट विद यूनिट डायमेंशन। दो तीन चार क्लासेस की बात है, तीन चार क्लास में हो जाएगा वो।
हेलो हेलो। तो वर्कशीट हो गया बोला, बीपी एयर वाला 78 टू कहाँ कहाँ तक दिया था? 115। कोई डाउट? नो डाउट्स? ऑल डन? ओके। अंबर, कोई डाउट? टिल 115 आई थिंक, हाँ बस मॉडुलस ही था। सबके सब सॉल्व हुए हैं ना, ऑल? अच्छा, बट यू विल लाइक डू इट, डाउट्स नहीं है ना? ओके। मॉडल्स में तो ऐसे कुछ खास है नहीं, जो कोई यूनिक प्रॉपर्टी तो है नहीं, है ना? दी ओनली वन प्रॉपर्टी जो स्पेशल केसेस होता है, जैसे कि इफ़ यू हैव लाइक mod a plus mod b directly given equal to mod a plus b और mod a minus b, तो if you can observe this pattern तो you can write answer directly, है ना? क्या होता है इसका रिजल्ट? सेम, मतलब a into b greater than equal to 0, है ना? And mod a plus mod b, if this is equal to mod of a minus b, so here it will be a into b less than equal to 0। ठीक है, कैसे होता है इसका लॉजिक पता है ना? कैसे होता है? दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, करेक्ट? So if you square both sides, it will be like a square plus b square plus, and it will be twice of mod ab,
and RHS will be mod of a plus b square. तो mod का square मतलब you can write directly this expression का square, so it converts to a square plus b square plus 2ab. So you can cancel this out. So you have basically mod ab equal to ab. तो mod equal to mod fx equal to fx तब होगा when RHS is greater than 0. ठीक है. तो if you get multiple difficult expression तो पहले ये जरूर चेक करना है कि इधर पैटर्न और नॉट. सिमिलरली फॉर इनइक्वालिटी ऑल्सो, उसमें अगर मान लो ऐसा है mod a प्लस mod b लेस देन इक्वल टू mod a माइनस b, इसका क्या रिजल्ट होगा? Not possible. Not possible. Like this side, what you will have? We'll have mod ab, and this side, if you do what it will convert to, this will be minus of ab. And so mod ab minus ab, even if ab is positive, ab is negative, it won't satisfy. है ना? So there will be no solution for this. ठीक है. बाकी मैक्सिमम मिनिमम वाला जो क्वेश्चन सब होता है कि मान लो तुमसे अगर पूछ दे कि भाई फाइंड मिनिमम वैल्यू of fx which is equal to modulus of x minus 1, modulus of x minus 2, modulus of x minus 9. What will be minimum value? For what x it will attain its minimum? X equal to 5 है ना भाई, क्योंकि मतलब किधर है 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9. तो फॉर 6 7 8 9 लाइक स्लोप विल बी कुछ ऐसा ऐसा है ना, एंड व्हेन यू रीच 5 आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज. जो तुम्हारा मिनिमम होगा वो मिड पॉइंट पे मिल जाएगा. करेक्ट. इफ यू हैव इवन नंबर ऑफ टर्म्स, उस केस में क्या होगा? देयर विल बी 2 पॉइंट्स ऑफ मिनिमम, because in that case the variables will cancel out, and for those 2 points the value of fx will be minimum. ठीक है. ओके. चलो मॉड में तो अब कुछ है नहीं. GIF कंटिन्यू करते हैं. तो वी वर डूइंग 2x प्लस बॉक्स ऑफ x 3x प्लस 5. ठीक है. So question is product of box of x plus half and box of x minus half is a prime number if this product is a prime. Find the value of x.
मॉड्यूल देने में, मॉड्यूल x will be, हाँ x will, there will be a range, है ना, -1/5 टू नेगेटिव नहीं आएगा। प्रोडक्ट अगर प्राइम नंबर है, देर इज ओनली टू राइट पॉसिबिलिटी, है ना, प्रोडक्ट विल बी टू। करेक्ट। यू कैन क्लियरली सी कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1, है ना। So the only possibility is this product will be equal to 2. So either it will be 1 into 2, or I think that's it. So x plus 1 by 2, मतलब कि x minus 1 by 2, ये होगा तुम्हारा 1 से 2 के बीच में, ठीक है। ऑटोमेटिकली x plus half will be from 2 to 3. So value of x will be from where to where, 3 by 2 to 5 by 2, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, x is from 3 by 2 5 by 2. What is other possibility? ये हो गया 1 multiplied by 2. The other possibility is कि box of x plus half, box of x minus half, this product is 2. दोनों के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम हो सकता है, तो इसमें -1 कौन सा होगा, ये -1 होगा, और ये कितना होगा, -2, ठीक है। सो अगर ये -2 है, so x minus half will be from where to where, it will be -2 to कितना, -1. So x will be from where, -2, 1 by 2. So -3 by 2 to minus plus half minus half. So this will be your answer. That x will finally belong to -3 by 2 to minus half. Equality नहीं होगा. Minus half union 3 by 2 to 5 by 2. और भी कोई इंटरवल आएगा बताओ? Any other interval possibility? No. Done? हो गया था ना? नेक्स्ट लिख लो. Question is find value of x which satisfies box of x plus half plus box of x minus 1 by 3, and this is equal to 8. Again you will get a range of x.
3 2 चेक करो फिर से. 3 2 हाँ करेक्ट. 10/3 ओपन और क्लोज्ड. करेक्ट. आ गया 10/3. कितना केस बनेगा यहाँ पे? मतलब व्हेन x इज इंटीजर, मतलब when x is integer here, so basically this is I plus I only, and this will be I minus 1, so that is equal to 8, so I is equal to 3. So when x is only integer, sahi hai, I equal to 3 will be a valid value. Now if we consider second case, which is when x is non-integer, x is something I plus f, तो ये हो जाएगा I plus, this will be I plus box of f plus half, and this will be kitna, I minus 1 by 3, so I plus box of f minus 1 by 3 equal to 8. ठीक है, so this is 3I plus box of f plus half plus box of f minus 1 by 3 is 8. तो अपने को कंडीशन अब इस पर देखना पड़ेगा, राइट? f plus half can be more than 1 as well, और ये जो बॉक्स है जीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो वी नीड टू फ्रेम केसेस. तो 1 कहाँ से कहाँ तक बनेगा इसमें? बॉक्स ऑफ f minus 1 by 3 कैन बी, ये 1 कैसे हो सकता है? -1 होगा, -1 और 0. हाँ, तो वही, तो मतलब कि जो अपने पास फ्रैक्शनल रेंज है उसमें कंसिडर कर लेते हैं. तो मतलब कि अगर इफ वी टेक फ्रैक्शनल फ्रॉम लाइक 0 टू कितना 1 by 3, 0 टू 1 by 3, तो 0 से 1 by 3 में कितना हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट? ये -1 हो जाएगा, दिस विल बी 3I. 0 to 1 by 3 में this will not change, this will remain 0, so 3I and this will be -1 equal to 8, so I will be equal to कितना 3 again. सही है ना? I is 3, so I is 3 and f is 0 to 1 by 3, so basically x कितना हो जाएगा? X will be I plus f,
तो ये हो जाएगा 3 से 10/3। तो इस केस में तो कुछ आंसर आ रहा है। दूसरा केस ले लेते हैं, बी पार्ट, व्हेन f is from 1/3 to 1/2. So when fractional part is from 1/3 to 1/2, so this is 3i, this will still remain 0, और ये भी कितना हो जाएगा 0 equal to 8. तो इसमें i तो it is 8/3, this is not possible. And third case, let's put f greater than half. तो अगर f greater than equal to half है, so this will be 3i plus, if fractional is greater than half, तो this will overall become greater than 1, तो ये हो जाएगा 1. And ये कितना होगा, this will remain 0 equal to 8. So here also we are getting non-integral value, तो ये भी possible नहीं होगा. So the 3 and 10/3, so final x value will be from 3 to 10/3. ये अपना आंसर, ठीक है. नेक्स्ट लिखिए. Find solution, and the equation is greatest integer modulus of x minus 1, x minus 1 plus greatest integer modulus of 12 minus x, box, equal to 11. ठीक है.
करेक्ट। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू 9। इसमें ए बी सी का वैल्यू निकलता है ना, तो देर इज वन मोर स्लाइटली शॉर्टर वे, वैल्यू ऑफ ए बी सी। मतलब उसमें क्या करना है कि जैसे फर्स्ट इक्वेशन में इफ यू मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी, तो ये 9 है ना। तो व्हेन वी स्प्लिट, तो ये, हाँ, तो सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी विल बी सेपरेटेड, करेक्ट, ए स्क्वायर, and then we'll have sigma a, and this side what we'll have 9 into a plus b plus c, so this will be 9 into sigma a। ये अपने को गिवन है, क्या कह रहे हो, हाँ, a स्क्वायर अपन b प्लस, तो दिस इज गिवन टू अस, राइट, सेकेंड इक्वेशन में गिवन है 32 है, तो अगर ये 32 है, 32 प्लस सिग्मा a इक्वल टू, हाँ, तो वी गेट सिग्मा a वैल्यू विच इज इक्वल टू 8 4। Then similarly in the second equation, हाँ, हाँ, वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा ए क्यूब अपॉन बी प्लस सी, एंड प्लस कितना हो जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 32 इंटू सिग्मा ए। तो ये गिवन है 122, तो सिग्मा ए स्क्वायर आ जाएगा, एंड सिग्मा ए वी जस्ट हैव कैलकुलेटेड 4, दिस इज 128, तो सिग्मा ए स्क्वायर वैल्यू इज ऑल्सो देयर 6। तो सिग्मा ए है, सिग्मा ए स्क्वायर है ना, तो टू, हाँ, तो वो यहाँ से सिग्मा ए भी आ जाएगा, ए की प्लस, हाँ, मतलब विद दीज टू वी विल बी एबल टू गेट सिग्मा ए बी ऑल्सो, है ना। कितना होगा सिग्मा ए बी, सिग्मा ए स्क्वायर विच इज, है ना, सिग्मा ए बी कितना होगा, दैट इज दिस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, है ना, दैट इज 16 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 5, तो सिग्मा ए बी भी आ गया, एंड वी वांट ए इंटू बी इंटू सी, हाँ, हाँ, मतलब अब इसमें या फिर इसी इक्वेशन से आ जाएगा बिना क्यूब का झंझट लिए। तुम क्या कह रहे हो, ए क्यू प्लस, हाँ,
तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू में यू विल हैव, बट वेयर डू यू गेट ए क्यू बी क्यू सी क्यू, कैसे आएगा वो, उसमें भी तो एबीसी चाहिए होगा, एंड विद दिस वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट। बट जितना इन्फॉर्मेशन है अपने पास, वी हैव सिग्मा ए, वी हैव सिग्मा ए स्क्वायर, वी हैव सिग्मा ए बी, तो दिस फर्स्ट इक्वेशन इफ यू एड वन टू ऑल द इक्वेशंस, इफ यू ऐड वन, है ना, यहाँ पे 3, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको कॉमन ले लेंगे, एंड दिस विल बी कितना, 1 अपॉन बी प्लस सी, तो 1 अपॉन बी प्लस सी, एंड बी प्लस सी, या इसको सीधा ही सिंप्लीफाई कर दो, 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस, और इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, थोड़ा और छोटा कैसे कर देंगे भाई, वी हैव ए प्लस बी प्लस सी इज वॉट 4, हाँ, तो बी प्लस सी को वी विल राइट 4 माइनस ए, 4 माइनस बी, 4 माइनस सी इक्वल टू 12। तो व्हेन वी मल्टीप्लाइड, यू सी जो भी एलसीएम होगा, वॉट एवर इज एलसीएम, एवरीथिंग इज नोन एक्सेप्ट एबीसी, एवरीथिंग, ऑल टर्म्स वी हैव कैलकुलेटेड, सो एक्सेप्ट एबीसी, तो वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। हो गया ये, ओके, लिख रहे हो इसको, बस 2-3 लाइन हिंट लिख लो। दोबारा इस संडे तक ये पेपर सॉल्व कर लेना है ना, बिकॉज नेक्स्ट संडे ऑनवर्ड्स थोड़ा हो सकता है कहीं पेपर शुरू हो जाए तो टाइम कम मिलेगा। ये भी एक पीवाई क्यू ही है वैसे, जिसके मीन आरएमओ, आरएमओ में आए थे कुछ। ओके, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन गायब हो गया, क्या था क्वेश्चन, बॉक्स ऑफ x माइनस 1 एंड 12 माइनस एक्स इक्वल टू 11, तो कुछ नहीं, बस वी विल मेक 3 केसेस, लाइक दिस इज बॉक्स ऑफ मॉडुलस x माइनस 1 प्लस बॉक्स ऑफ x माइनस 12 इक्वल टू 11, है ना। So we'll make 3 cases. Case 1 will put x greater than equal to 12. So when x is greater than 12, this will be box of x minus 1. ये वाला भी positive होगा. This will be also positive, x minus 12. And तो इसको लिख सकते हो ऐसा, box of x minus 1 plus box of x minus 12 equal to 11. So what is box x value?
12 1 13 24 12, इसका मतलब कि जो x है that is from 12 to 13. So is it valid? It is definitely valid. ठीक है. फिर case 2 will take when x is from 1 से 12 है. तो 1 से 12 है तो it will remain mod of x minus 1. ये mod negative हो जाएगा तो this will be like 12 minus x equal to 11. 1 से 12 में second mod will be negative तो ये box of x plus box of minus x और ये minus 1 plus 12 11 ये कितना हो जाएगा 0. This will be 0. So when is this true? When x is integer. जब x integer होगा तो ये तभी true होता है. So for the given interval x will be from 1 to up to 11. और last case, case third, when x is belonging to where भाई minus infinite to 1. इसमें both will open with negative. So box of minus x plus ये भी वाला minus होगा and it will be 12 plus 1 13, right? 12 plus 1 13 तो कितना हो जाएगा ये? कहाँ गया? हाँ तो 13 दिस विल बी -2. ठीक है तो ये कितना हो जाएगा? लाइक माइनस बॉक्स ऑफ विल राइट -1 माइनस बॉक्स एक -1 माइनस बॉक्स एक 0. तो यहाँ से x दिख रहा है साफ साफ कितना हो जाएगा 0 से 1. ठीक है तो इन टोटल इफ यू टेक यूनियन 0 से 1 देन फ्रॉम 1 to 11 एंड देन 12 to 13. ठीक है हो गया था. नेक्स्ट करो. Find values of x and the equation given is box of 3 by x plus box of 4 by x equal to 5.
गुड मॉर्निंग। ओके, 6 आ रहा है। आंसर नहीं मेरे पास, आई विल चेक। तुम्हारा करो, ट्राई करो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। वाई कितना आ रहा है? अच्छा। हम्म। हाँ सही। सही है, उसको सब्स्टिट्यूट करो, आ जाएगा। इफ यू ऐड ऑल थ्री तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स जेड वाई बॉक्स एंड फ्रैक्शन, बॉक्स फ्रैक्शन, तो मतलब ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड हो जाएगा ये। एंड दिस इज 15 14 29 13, कितना हो गया भाई? 42। सो बेसिकली एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये तुम्हारे पास है 21.3। ठीक है, और अपने को चाहिए x। तो अगर फर्स्ट वाले इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, इफ वी सब्ट्रैक्ट तो दिस इज y माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर y and plus z minus fractional part of z is 21.3, so this is 1 8, है ना। so this is fractional part of y and plus integer part of z, तो यहाँ से तो y और कुछ कुछ आ जाएगा। दिस इज 8.1, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? मतलब कि बॉक्स ऑफ z कितना होगा? 8, and fractional part of y will be definitely 0.1, there is no other choice, 0.1। तो बॉक्स ऑफ z है अपने पास एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y है, तो इसका यूज करके देखते हैं सेकेंड इक्वेशन का। सो बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज 0.1 एंड z इज 14.3, तो मतलब बॉक्स ऑफ z एंड प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 14.3 यूजिंग सेकेंड इक्वेशन। सो बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ z तो अपने पास 8 है, so this will be 14.2 and 8 6.2, और इधर कितना हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z, तो मतलब बॉक्स ऑफ x कितना है? बॉक्स ऑफ x विल बी डेफिनेटली 6 and fractional part of z will be 0.2। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z इज 0.2, बट अपने को चाहिए x, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो सब हो ही जाएगा, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस y, so y is box of y plus fractional part of y and plus box of z is 8, तो
is equal to 15.1. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस और कुछ पता है अपने को, हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज नोन, तो इंटीजर y इज इक्वल टू 15.1 15.7. अच्छा अच्छा, तो मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, 0, तो x इज 6. हो गया था ना, डन. ठीक. नेक्स्ट. prove that box of x1 plus box of x2 plus box of x3 box of xn is always less than box of x1 plus x2 x. Very simple. इक्वालिटी भी हो गया है ना, लेस देन और इक्वल टू. और इसको एज अ प्रॉपर्टी भी याद रखना है, काम आएगा ये. रिमेंबर दिस एज अ प्रॉपर्टी एज वेल. टू प्रूव इट व्हाट वी कैन यूज, दो के लिए कर सकते हैं, तीन के लिए वही जनरलाइज कर देंगे, दो के लिए कर लेते हैं कि if x1 plus x2 is if I write x1 plus x2, तो भाई इसको ऐसा लिख सकते हैं कि this is box of x1 plus fractional part of x1, x2 is box of x2 plus fractional part of x2. Now if I take box both the sides, so box of x1 plus x2, that will be box of x1 plus this will be box of x2 plus fractional part of x1 plus fractional part of x2. So for these two, clearly we can write x1 plus x2 equal to, ये integer we can write outside, box of x1 plus box of x2 and plus it will be box of fractional part of x1 plus fractional part of x2. ठीक है, तो clearly दिख रहा है कि जो addition है that will make it greater. So definitely box of x1 plus x2 will be less than or equal to the individual integer box x1 x2. ठीक है, and the same we can generalize for n elements. ठीक है, the same can be generalized for n elements.
अच्छा हाँ, दिस इज ग्रेटर देन, एज अ प्रॉपर्टी भी इसको याद रखना है. नेक्स्ट, again this is also property which you must have seen. So box of x plus box of x plus 1 by n plus box of x plus 2 by n box of x plus 3 by n, and this will go up to x plus n minus 1 upon n. This is equal to box of n into x where n is a natural number. काम का प्रॉपर्टी है, मेंस एडवांस में आता रहता है. इसको प्रूव करने का ट्राई करो. Try to prove it. Done this before? क्या बोलते हैं इसको? हाँ, हर्माइट्स आइडेंटिटी. प्रूव करो इसको.
हो गया, बताओ। हम्म, ठीक है। ये स्टेप में सुना। हम्म, हम्म, ओके, ओके, हम्म, ओके। तो दिस, ये जो एन वाला स्टेप है, यू आर टेकिंग इट आउट। हम्म, हम्म, ठीक है, तुम्हारा तरीका। हम्म, बट एक्स तो इंटीजर होना जरूरी नहीं है ना। मतलब तुम्हारा जो आंसर है, यू आर गेटिंग एन आई प्लस एन माइनस है ना। हाउ इज इट एन इंटू एक्स? वो एन इंटू एक्स कैसे हो, मैं समझना चाह रहा हूँ। एक्स तो नॉन इंटीजर भी हो सकता है ना। हम्म, हाँ। तो सी दिस यू हैव टू पुट प्रूव इट इक्वल टू बॉक्स ऑफ एन एक्स। ये इसके इक्वल कैसे है? हम्म, हाँ, दैट यू विल टेक इट आउट, है ना। दैट विल बी एन इंटू आई एन प्लस एन एफ। अच्छा, दैट यू हैव प्रूवन ऑलरेडी इक्वल टू एन माइनस ए। अच्छा, पूरा कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। और कोई तरीका? एनी अदर वे? हाँ, मतलब यूजिंग पीरियोडिसिटी इट वुड बी लाइक स्लाइटली इजियर। अरे यार, ये तो हटा ही दिया इन लोगों ने।
फिर कुछ क्वेश्चन भी देना था, ठीक है। व्हाट यू हैव टू ट्राई, पीरियोडिसिटी का बेसिक डेफिनेशन तो पता होगा। व्हेन डू वी कॉल अ फंक्शन पीरियोडिक? व्हेन एफ एक्स प्लस के इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए, है ना। जस्ट अ मिनट यार, नीरज एक मिनट। ये मैं पढ़ा ही रहा था, इसने क्लास ही बंद कर दिया। मैं क्लास ले रहा था, इसने क्लास ही बंद कर दिया। इसमें तुम वो लगा दो, कोई पीडीएफ लगा दो बस ऐसे मेरे को। ये नोट 3 अनइंस्टॉल कर दिया है क्या? क्यों? बस पीडीएफ मेरे को, बस पीडीएफ ओपन करके दे दो। तुम्हारे स्कूल में है क्या, था क्या डीपीएस में ये स्मार्ट बोर्ड? नारायण में तो उसी पढ़ाते हैं, व्हाइट बोर्ड पे स्मार्ट बोर्ड है। हम्म। मैम बस पीडीएफ लगा दो आप, बस 10 मिनट, आई नीड ओपन पीडीएफ, ब्लैंक पीडीएफ। अच्छा ओके, ठीक है ठीक है, फाइन फाइन। हाँ, नहीं नहीं, नो नो नॉट रिक्वायर्ड। है तो इसको पीरियोडिसिटी से एक बार ट्राई करना। तो एफ एक्स में व्हाट वी कैन अज्यूम कि दिस इज एक्स प्लस 1/n, एक्स प्लस 2/n, एंड दिस इज एक्स प्लस n माइनस 1/n माइनस बॉक्स ऑफ एन एक्स। इसको एक नया फंक्शन मान लो, ठीक है, दिस होल थिंग, राइट। और इसमें इफ यू चेक हियर, इसमें इफ यू रिप्लेस x with x plus 1/n, तो what will happen? If you replace x plus 1/n, ये हो जाएगा x plus 1/n, this will be x plus 2/n, and throughout ये कितना हो जाएगा, x plus minus 1/n cancel out, it will be कितना, x plus 1, right, x plus 1, and minus this is n into x plus 1/n, so this will be nx plus 1। तो इफ यू कैन सी, कैंसिल हो जा रहा है वापस से, तो दिस विल रिमेन एफ एक्स ओनली। तो मतलब कि ये जो फंक्शन है दिस इज पीरियोडिक विथ पीरियोडिसिटी 1/n। अब इसमें व्हाट यू हैव टू डू, हाँ, मतलब इफ यू कैन प्रूव दैट फॉर एनी एक्स इट इज 0, 0 से 1/n में कोई देख लो। हाँ हाँ हाँ, फिर से बोलो, समझा नहीं मैं, थोड़ा तेज बोलो। हाँ हाँ, करेक्ट। हाँ, एफ ऑफ एक्स विल बी 0, ठीक है। मतलब एक्स प्लस सलेनो जो तुम बोल रहे हो एक्स प्लस, एक बार फिर से बोलो। हम्म। हाँ, मतलब दैट तो वी हैव टू प्रूव नो कि इट इज 0। ये तो हमने बस ये प्रूव किया है कि दिस इज पीरियोडिक।
है ना. आई नीड टू प्रूव कि दिस एफ एक्स विल बी जीरो. जो तुम कह रहे हो वो तो एक पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन बता रहा है ना. बट हाउ इट इज, लाइक कैसे वो वहां से ये समझ में आ रहा है कि यही जीरो हो रहा है, वो कैसे कह रहे हो. है ना, मतलब कि व्हाट आई सजेस्ट कि जो जैसे यहाँ तक आ गया तो जीरो से वन बाई एन में किसी भी एक्स पे देख लो, वो जीरो आ जाएगा. और अगर जीरो है इसका मतलब इट विल सेटिस्फाई फॉर. हाँ, दिस विल मेक सेंस. हाँ. हाँ. हम्म. करेक्ट है. हाँ. हम्म. राइट. नहीं, दिस इज ट्रू. ये तुम्हारा लॉजिक सही है. ये काम करो, फटाफट कुछ लिख लो, इसको कल दोबारा डिस्कस कर लेंगे. यू हैव टू प्रूव box of x by n equal to box of x upon n, again box for n belonging to integer, sorry, natural. Box of x by 2 plus box of 2x by 3, this is equal to x. You have to find number of real solutions. आंसर भी लिख देता हूँ, है ना. थर्ड वन, find number of positive integral solution, and the equation is box of x by 99 is equal to box of x upon 101. And the given answer is 2499. Fourth, fractional part of x plus fractional part of x square is equal to 1. It's given that mod of x is less than equal to 10. Find number of solution. Answer is 181. For all n belonging to natural, you have to prove that greatest integer of root n plus root n plus 1 is equal to greatest integer of root over 4n plus 1. Root n plus 1, root of 4n plus 1 for all natural numbers you have to prove. Then prove that for n equal to 1 to 3, n plus 1 by 2, n plus 2 by 4 plus n plus 4 upon 8, n plus 8 upon 16, and this series will continue up to infinite is n. For any positive integer n, prove that
greatest integer of n by 3 plus greatest integer of n plus 2 by 6 plus greatest integer of n plus 4 by 6 is equal to greatest integer of n by 2 plus greatest integer of n plus 3 upon 6. Eighth, box of x cube plus box of x square plus box of x is equal to fractional part of x minus 1. You have to find x. Answer is x equal to minus 1. Greatest integer x multiplied by fractional part of x plus x is equal to twice of fractional part of x plus 10. इसका आंसर मेरे पास नहीं है, इसको अपन कल चेक कर लेंगे डिस्कशन में. Box of x fractional part of x plus 2 plus x twice of fractional part of x plus 10. Then 10th, x plus 92 by x is equal to box of x plus 92 upon box of x. You have to solve for x. X is minus 9.2. The answer is 92 by box of x. Then one last question, 11th. X is sum of box of 1 power 1 by 3, box of 2 power 1 by 3, box of 3 power 1 by 3, and this continues up to 7,999 to the power 1 by 3. ठीक है, सबका पावर 1 by 3 है इस वाले में. Find value of box of x upon 5000. आंसर इज 23. ठीक है, तो ये 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, कल कर लेंगे इसको. एंड इन वीपी एयर शीट उसका भी एडवांस वाला सेक्शन शुरू कर देते हैं, मुझे ना.
Oh. अच्छा, what was the last thing we did? क्या किया लास्ट में? हम्म, got it. ठीक है भाई. Okay. So before this. Um, so basically, just to summarize both model before we move on. क्या setup है both model का? There's a nucleus around which you have electrons which are in the stationary orbit, which are getting closer as you move across from the nucleus. You know, as distance increasing, the distance between the these energy orbits is decreasing. We can find the value of energy, we can find the value of velocity, we can find the value of radius of these orbits. We also know the angular momentum, which is nh upon 2 pi. And when you take any of these atom in a discharge tube, then you will be providing potential. Electron jump, when they come back, they release energy. That release energy you can take on a photographic plate. That photographic plate is spectrum. And that's how Bohr's model has been able to explain the phenomena of hydrogen spectrum. Um, then that high spectrum you have Lyman Barber Paschen bracket fund series. Lyman lies in UV region, Barber lies in visible region, rest of them are in infrared, Humphrey in far infrared. That's pretty much it. And there's a Rydberg formula, which is 1 upon lambda is equal to RH Z square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square.
I guess that's it. That summarizes everything. Okay. चलो. Now drawbacks of Bose model. तो सबसे पहली बात है तो Bose model में जो spectral line है ना, the spectral line, when you put that spectral line in a magnet, this is one, but when you put that in a magnetic field or an electric field, those lines sometimes split. Bose model couldn't explain why that split. That split in so this is one line, in magnetic electric field they split, and splitting of a spectral line in presence of magnetic field is called Riemann effect, and in presence of electric field it is called Stark effect. Where did the Stark effect go? Okay, this is called Stark effect. Okay, why are these lines splitting? We don't know, can't explain. Maybe the next model will be able to explain. Clear? Write this. We'll discuss this. 1 to 48 did? 1 to 48 I gave. Done. And J VP the advanced 1 to 10. 1 to 15. Done? What is doubt discussion? You do it? 5, 6. Means what it did? Write this stuff. Do you know why these lines split? No? You don't know, you those have studied. Splitting, matlab one line will become 2 line or 3 line. It is through vacuum, you passing, that is one light, all of a sudden that phase, wherever it is passing, let's say this room you divide into 2 halves. One half has no electric field, this has electric field. So when it is passing through here, you see only one line, but when you put it in passing through electric field, it splits into 2 or 3 lines. Okay? Or magnetic field also. The magnetic field is splitting in presence of magnetic field is called Riemann effect, and splitting in terms of Stark is called electric field is called Stark effect. Can you guess? मतलब चलो छोड़ो, तुमको नहीं पता है, I understand, but and we will talk about this later. Very simple explanation. But could you think what could possibly be based on whatever you know till now? So why are you getting like dual or triple whatever, like X number of is splitting into different? Why is that happening? Okay. Okay. That's not it. कोई नहीं. लिख लिया? Done? This basically indicates, and ये क्या बोल रहा है? How do I explain this to you? Let me think about it. ये कह रहा है कि you know Anshu lives in JP Nagar phase 5. Okay. But then says, you know what, in JP Nagar phase 5 or whatever, like Anshu goes to study in this building. Now that building has 3 levels. So first identifier is only able to identify the broader context. But later on you are able to identify, अच्छा वो building के अंदर ना 3 floor है. So it is what it is. It actually revealed to us that there are more energy levels or sub energy levels than what we are thinking about. है ना? Yes. है ना? Again, it doesn't make sense here. It's fine. Once we study the wave quantum model, it will make sense to you. But that's actually what it revealed to us. Well, you know, we are looking at these broader energy levels. There are sub energy levels within those energy levels. This is what. Huh? Exactly. So because now we are looking at both models, now we'll completely change the model. It will make sense. But absolutely, that's why we write. That's why we're writing drawback.
You have a very absolutely valid point. That doesn't make any sense. It's fixed. It's discrete value. It's unique. Not only discrete, it's unique. How does that make sense? Right. Okay. अच्छा इस डायग्राम में तो बता ही दिया कितने एनर्जी लेवल तो भाई these point already we have talked about, I think. Maybe not this one. They were, he said it is NH upon 2 pi. How did it come? Where did it come from? No explanation. Although he's right. Actually, Bohr's everything is right. You, even if they saying discrete line, even the first case, so there are more than what is there. But his address of addressing that there is a building, there lives the electron. That part is right. He just didn't know there are different what do you call floors in that building as well. He didn't account for that. So all the drawbacks, none of the points contradict the point that he made. It's just there is more. There is basically more to be discovered, is what we understand from all of it.
Done? Okay. So now we come to the point. Why did we study waves? Huh? So matter is also wave. So basically here we studied light and we understood that something that we assume is a wave also has particle nature. So one genius guy thought, what if what we are assuming to be wave has particle nature? So what we assume to be particle will have wave nature. That guy name is de Broglie, and his hypothesis, and along with one more guy, Heisenberg, changed the way we look at atom, and we have become the modern theory begins here. This is path to quantum model. So this guy, very interesting guy by the way, French guy, used to work in radio towers in World War I. Actually had nothing to do with it. He was I think very young. I think 19 or 24 or something. Okay. अच्छा डिफरेंट फार्मूलाज क्या है भाई एक तो ये हो गया अब P क्या होता है P स्क्वायर इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन P एंड काइनेटिक एनर्जी आई ऑलवेज फॉरगेट चलो कोई नहीं ड्राइव कर लेते हैं इसको स्क्वायर कर देते हैं ये P स्क्वायर हो गया ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m है ना तो P is what root of 2m K. This formula will become h upon 2m. And kinetic energy is what? This is one formula. We can also write this formula as 2m q into v, where v is volt, not speed, है ना? Right? K is 1 by q.
क्या लैम्डा, अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसा बने, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना हो तो कैसा बनेगा? है ना, ये सब तो मैं बता, तो आई एम नॉट गोना डू ऑल दिस, इफ यू नो, we have talked about graphs in the beginning. One thing that you need to do, and then it will be ideal if you can remember that, is find this value for electron. Can you find this value for electron? So इसमें what is constant for electron? H is constant, M is constant, Q is constant, volt is the only variable. So basically find the formula for lambda and volt for electron. Find it first. So now do this for an electron. For an electron, find this. इस फॉर्मेट में लेके आना बिल्कुल।
Have you guys studied interference, constructive interference? Hmm? In- 150. Huh? Its value is 150. Okay. So this formula again, if you because more things again theoretical here, more you remember, more easier it will be. Baki to everything you can derive, nothing too complicated. But a lot of questions they'll directly give you kinetic energy in electron volt. If it is electron volt, always change it. Sometimes a lot of time they'll give you charge and volt, so you can do that. And if for an electron voltage given directly, you can solve. Okay. चलो भाई अच्छा number of waves in a Bohr orbit तो n होती हैं n waves होते हैं this again this comes from constructive interference this you will just now you can do you will study this in physics basically for circular wave ko ये basically you know what are we talking about एक one Bohr orbit is there how many waves will basically come and form that's a terrible diagram actually I should delete this don't make this if you want to make this diagram look in your book I think wait let me check if I have this diagram uh, basically you understand how many waves basically come so number of waves in the given orbit will be n only so first orbit will have one wave second orbit will be two waves and three waves and so on by the way another thing is not given na here okay I will do it here so what waves to wave वहां से हम draw कर लेंगे another thing is actually we can prove these things whether they work or not and the proof that he couldn't given so he said mbr is equal to nh upon 2 pi है ना constructive interference का concept is if constructive interference is happening in a circular path then the 2 pi r should be equal to n lambda that is the condition for that okay so now if I rearrange this what does this come out to be this come out to be 2 pi r is equal to nh upon mv what is h upon mv lambda what hmm. हाँ नहीं n is not lambda is wavelength so where lambda will be 2 pi r n or you can say n will be 2 pi r by lambda देखो ये तो थोड़ा even I am little weak because this is a little physics thing out of little bit my scope but I know one thing is this constructive interference happening constructive interference very simple thing two wave come the amplitude gets add up and if they are in out of phase no sorry if they are in phase they will meet superimposition type and if they are constructive they'll cancel each other basic concept I understand and then I understand this part if they have you have to do constructive interference of two waves in a circular wave then it has to follow the condition of 2 pi r equal to n lambda yes yes okay if you want to draw the diagram you can draw them these are the waves actually most of this chapter you will actually study in physics
modern physics, because most of this work is by physicists only. As I said before, so photoelectric effect and all that you study in modern physics, waves you will study in waves. Sorry? Microphone 2. Done? Okay. No, don't do these questions. Wait, I'll give you questions. Right? Find ratios of de Broglie wavelength. Find ratio of de Broglie wavelength of photon and alpha particle. First, if both have same kinetic energy, ratio of de Broglie wavelength of photon and alpha particle. Wait, sorry, my bad. Sorry, very bad. What is this? Of photon and alpha particle. Correct. Find the ratio of de Broglie wavelength of photon and alpha particle if both have same kinetic energy. Second, if both are accelerated from rest by same potential difference. How to do bhai? Photon to, what is the mass of photon? What is the mass of photon? Photon is massless. So, and in these kind of cases, basically you will take it as electron mass. Okay? Because we don't deal with the very, actually what happens is this now mass velocity relationships come into picture, rest mass, mass as movement, but we don't deal with that. We study here in 11 12 very basic stuff. We study ABC of what, if you want to study chemistry, this is what ABC is. So we don't deal with the complex stuff, to be very basic stuff.
So here, just take it as electron and solve it. Simple. Ever a question comes like this, you take mass of electron, solve it. So ये question भी करते हैं. What is- First one is, huh? How? Oh, sorry. Did I say electron? Oh, my bad. तो complicated हो जाएगा ये. Sorry. Change it to proton. Change it to proton. हाँ, sorry. ये बहुत गंदा नंबर आ जाएगा. Change it to proton. Forget proton. Change it to proton and alpha. Now do. It will be simple. हाँ, direct एकदम. हाँ, second one will be. Hmm? No. हाँ. हाँ. Not 1 by root 2. Really? क्वांटम के इतने क्षण क्यों है? 5 सवाल दिए क्वांटम के प्रश्न में. एक सवाल दिया है क्वांटम का. Why? अच्छा नहीं इधर है. Hmm? Root 2 is to 1. How? 2 root 2 is to 1. No? No? Okay. What was the question? What do you want? एक चलो पहले तो डिस्क्राइब करते हैं. प्रोटॉन और अल्फा है, ठीक है. फर्स्ट केस में क्या बोलते हो? व्हाट डज इट फर्स्ट केस? सेम काइनेटिक एनर्जी. ओके भाई. तो लैम्डा फॉर प्रोटॉन विल बी व्हाट? लैम्डा. अरे lambda proton upon lambda alpha will be equal to under root 2 kinetic energy, same kinetic energy. 2 kinetic energy mass of alpha upon 2 kinetic energy mass of proton. ठीक है भाई. Mass of alpha, mass of proton. This mass of alpha is 4 times mass of proton. So this will be 2. Second case, what are they saying? What is same? Potential difference. So this is basically 2 m alpha. This I can write as q alpha, and this I can write as v alpha. So 2 mp q p vp, these are same. This is same. M alpha is how much? M alpha will be mass of alpha in comparison to mass of, this is you can 4 times mass of proton upon mass of proton. Q of alpha will be 2 times q of p. This will be q of p. This will get cancelled. This will get cancelled. This will be 2 root 2. Why are you saying root 2 and 1 by root 2 and all that stuff? Solve this. Okay.
You write this one. Simple one, but write this. It's actually a good template of a question. Write this one. What is the answer? Hmm? What is the answer? देखो. I'm trusting you guys. I will have to solve. I don't know the answer. Don't need to solve now. Don't say I don't think so. So write this also. What is it? Electron in hydrogen reaction. ये I1 ऐसे क्यों लिखा है ऊपर? लैम्डा 1 लैम्डा 2
What is the answer? How do you do this question? Any idea? No idea? Some idea? What we do? Correct. 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 The difference between that will be equal to h by lambda. That's it. Huh? What is the relation of kinetic and total energy? Total energy. Okay. That's it. Hmm? बताओ भाई फटाफट नहीं तो फिर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हारा नहीं है
So they solve it. So basically, what the setup is very simple, right? Setup is by there are two electrons. This electron is here with a lambda 1. This jumps here to lambda 2. What is the, and now because of this a photon will be released. What is the lambda of that photon? That is the setup. That much is clear. So by what is the energy of this electron? How can I find from this lambda 1 is the de Broglie wavelength. If I know lambda 1, I know kinetic energy, and kinetic energy, total energy, same magnitude. So lambda 1 is what? H upon 2 m kinetic energy 1, or kinetic energy 1 is equal to what? So square कर दो. So this is lambda 1 square is equal to h square upon 2m ke1. This will become ke1 will be equal to h up square upon 2m lambda 1 square. Similarly, kinetic energy 2 will be what? H upon 2m lambda 2 square. Where do I write? Right here. So the difference between them will be equal to hc by lambda. This will be equal to h square upon 2m 1 upon lambda 1 square minus lambda 2 square. H will cancel h. This will become 1 upon lambda is equal to h upon 2mc. This will become lambda 2 square minus lambda 1 square upon lambda 1 square lambda 2 square. You reverse that, lambda will be equal to what? 2mc by h lambda 1 square lambda 2 square upon lambda 2 square minus lambda 1 square. So, 2 minus 1 करना है ना. अच्छा, I did 1 minus 2. Okay, sorry, my bad. 2 1 1 2 1 2. Okay. Which option is this option? This is option D. Clear? This question, please write by again a template question which comes again and again and again. Even though it's very straightforward, write this. So in chemistry, the difficulty level of question will always inherently be easy. It's just theory. It's because it's really about theory and understanding of theory and application of it. हाँ मतलब फॉर्मूला theory का culmination है वो तो. But मतलब when you're doing physics and maths, basically what you're doing is setting up a grammar, and you can go tangentially as much as you want. Here it's about learning about a person, and because we are just starting out kids, 11 12, we are understanding very superficially. People who actually take up a subject now, somebody who gonna study like whatever anesthetics or whatever, they're going to go into actually real cutting edge stuff. So we are just understanding basic theory and their application. So like physics and maths, you can really go. Not much scope here. Very easy. That's why most people score very well in this. Okay, bhai. क्या आंसर इसका? So fourth Bode orbit. So 2 pi r equal to n lambda. So 2 pi r4 equal to 4 lambda. R4 is क्या निकालना, क्या लैम्डा ही निकालना है ना. अच्छा, तो lambda is basically 2 pi r4 by
2. So lambda is pi R4 by 2. Now how do we get R4? Huh? So R4 will be what? A naught n square by z. N value is what? For what we are solving? Fourth orbit. Z is 1. So R4 will be 16 times A naught. So lambda will be pi into 16 A naught by 2. So pi will be lambda will be 8 pi A naught. Okay. Okay. So one last question. What is the answer? What is the answer? D, है ना? Kinetic energy will be what? E minus V naught, and lambda will be 1 upon inverse of kinetic energy. So lambda will be root of, okay. चलो भाई, तो उसने कहा next guy came by Heisenberg. Heisenberg said okay, good. So you were saying light is a wave. Then you say okay, wave has particle nature. So dual nature, okay. So now we are saying matter has particle. No, sorry, whatever is particle also have wave nature. So if you have particle and if your particle has wave nature, then whatever Bohr did, how does that hold up? Particle exists in one point in space at any given time. Wave exists in a space, right? Particle exists at any given point in time in a point. Wave exists in a space. How can you find the exact velocity or position for something that doesn't exist in one place at a time? You can't. So he says there is always going to be an error. You cannot find. That's called Heisenberg uncertainty principle. So he said exact position of velocity you cannot simultaneously find. And at the very least, there will always be an error of h upon 4 pi in the product of delta x and delta v, where delta x is the error in position, delta v is the error in velocity. Okay. And if you will like, bhai, you know what? I will make 1 0. If you make 1 0, you other error will become infinite. You know this idea, right? If you look at an electron, you change the life of an electron. You understand that? No? Very, very simple, no? Because you look at it, the light has struck that, move. It changes position, you know, whatever the path it was going on because of your observation. Matlab whatever, yaar, because of that only. The act itself, however, whichever is coming first or second or later point. But point is the moment you have observed it, its position has already changed. That is the good idea. Huh? Function collapses. What does that mean? I don't know. Right. Right. Working of it. Right. Because whatever it was must have been before you observe it, of any kind of observation in isolation, it is going on a different thing. The moment observation, light striking, it comes here like that, whatever. So it has changed now. So whatever you're talking about, gone.
डायग्राम में क्या है? अच्छा I didn't do that experiment, but I should have. Generally, in lambda, I forgot completely. In de Broglie, we give this a question कि एक 1 kg की ball है. Now find the lambda value for that if it is moving with certain velocity, whatever. हाँ, so उसका lambda जो आएगा वो इतना ज़्यादा small आएगा to be like 10 to the power minus 33 or 34 or whatever. And we understand from our EMR diagram कि भाई generally we are dealing in angstroms or picometer, nanometer. That is our range of waves that we understand. That is just too freaking tiny for to be material to be of any kind of significance. So somebody says theoretically talking, why Anshu is running now. Anshu is running. Anshu is running. Does Anshu have wave nature? Definitely does. Right? Is it significant? No, it's not. And it's not like maybe if you are. What is that? Superhero? No, what is that? That Z. What is flash? Flash. Flash. unless you know, unless you are flash, doesn't matter. This specifically would be applicable for microscopic particle or subatomic particles, like that. It wouldn't have any kind of significance on larger bodies, not even theoretically. You can tell where I'm standing, you can tell where my position is. You can find out. Huh? Yeah. Then ये तो देखो वही जो मैं बोल रहा था. It is just that, है ना? If you look at it, you change the path, you change the trajectory, you change the stuff. Right, right. Okay. This also, if you understand this, this also you scattering. You understand scattering? Colloidal solution. You know colloidal solution and true solution. And in true solution, you don't get the you don't get scattering, but in colloidal solution get scattering. Why? Because particle wavelength है ना वो उसके बीच में फंस जाता है वो उसमें आ जाता है. In true solution, the particle size is too small. It comes in between the waves, so you can't see it.
Hmm? You guys ever read like sci-fi books? Huh? Star Wars doesn't count. Star Wars is not sci-fi. Like real good sci-fi people. Huh? No. Doctor Who, no. Maybe TV show. I don't know. I understand it's interesting TV show, but they're not like real actual ideas of science fantasized. Like they're like very cool people. There's this. Which one? Ah, I don't know the series. Mm, mm. So there's this couple of writers. One guy named Ken Liu, and there's this writer called Ted Chiang. They write like some amazing stuff. I don't know whether you guys read books or not. So they explore like really good ideas. One of because this reminded me of that. There's one story by Ken Liu which is titled uh, "Reading Habits of Intergalactic Species" or something basically. And he imagines basically different civilization in different uh, and their reading habits and how would they read. Really fascinating. Anyhow, so this large atom, what is the uncertainty position of this large atom? What is the answer? बताओ भाई जल्दी इतना टाइम दिया यार Did you guys get this book? Yeah, 24, 25. Huh? You have it? That's not good. That's not a good sign. What is the answer? Are you guys going to make me solve it here? Have some shame. Ah, why are you making me do this? Why? Did I do something? Hey, what did I? Oh, uncertainty find करना है इसमें. So delta x क्या दिया? अच्छा delta v दिया हुआ. This will be equal to h upon 4 pi m is how much? 0. Hmm.
Hmm? Sorry. Oh, I didn't write that. This is what? This is like what? 100 upon 8 pi? अच्छा what a mess I made. This will be delta x is equal to 10 to the power minus 34 plus 2 plus 6 upon 8 pi. तो 8 मतलब कितना हुआ ये? तो जाएगा 100 if I do so minus 2 so that is 28 upon 8 pi. तो जैसे सिंगल डिजिट आएगा तो ये तो पावर से ही आंसर आ जाएगा, सही हो जाएगा. यही बोला था ना? हाँ, दिस इज 324. हाँ करेक्ट. दैट इज द क्लोजेस्ट आंसर रिगार्डलेस फ्रॉम ऑल ऑफ इट रॉन्ग. सॉरी. अच्छा दे मेंट टू राइट लाइक ग्राम्स. ग्राम्स में भी कहाँ आएगा, तब भी कोई नो ऑप्शन नहीं है. व्हाट आई डिडंट अंडरस्टैंड. हाँ हाँ हाँ. could be actually. हाँ. But then again power of 23 comes, then none of the options still make sense. Fine, it's okay. 20 is the problem, only 23 that will directly go to 5. What is the value of delta V?
सीधे जाओ. How much? 625 into? Hmm. अरे यार. Why some number? Delta V is what? 3 into 10 to the power 5? Yes or no? Delta X you have to find. So what is the problem here? H upon 4 pi m. If I complain about math, it makes sense. You can't complain about it. 4, 3.14. Arey bhai. M is, what are we dealing with? Proton. Proton is what? 1.67 into 10 to the power minus 27. Delta V is what? 3 into 10 to the power 5. What is the answer? Tell me. हाँ तुम्हारा क्या रहा है? Both are not same. There is a difference of 10. One of you is getting is minus, or both are getting minus. So this is about 4 by 3. This get cancelled. 3, 3. This 4, 4 is 16. 16. This is 2 times 1 by 8 times 1 by 2, 5 times. 5 find what? Okay. We like don't have the patience to do all this. So basically now anything that is not quantum model of atom, na, you can do. Everything else is done. You don't have anything else left in this chapter except for quantum mechanical model. So one is, I'll tell you the homework, which is basically everything. 65 to 103 you cannot do for mains. Everything else you can do, I think. And 115 to 120. Okay, these parts you cannot do. Solve everything else. Okay, and this is from mains. Same for advanced. Twenty to 25 you cannot do. Thirty-six to 45 you cannot do. 50, 51 you cannot do.
except for this again, except for these questions you can solve everything. Okay, and when the next class begins, remind me. We will discuss first. We'll then continue. है ना? We'll do all the doubts in the whatever the next class tomorrow or I don't know Monday, whatever, whenever it is. Huh? Was there? Huh? Your classes, na? Saturday classes, na? Huh? So then tomorrow we'll discuss all the doubts. And I would say if you can solve the module also, if you get time, I don't know how much time there. Apart from this, if you can solve the module again, the only thing you cannot do is quantum mechanical model. Everything else you should be able to solve. You know, solve it. We'll discuss tomorrow.